Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm Fakhr Lodi with you, and this is our 35th lecture of Formal Methods for Software Engineering, and we are discussing Z specifications. In the last lecture, we started to discuss Z specifications. Remember that Z specification is a model-based specification approach in which we specify the system in terms of its state and space, and then we specify how do different operations that we define for this system, they change the state of the system. So we specify the behavior of the system in terms of the modifications to the state space of the system. And we saw that the basic unit of specification in Z is what is known as schema. In a schema, we have the schema name, and then there are two components, two parts of the Z schema. The first part is known as the signature. In the signature, we have the specification of the variables, the state of the system, and the operation. So we can have, depending upon what we have in a particular schema, we can have any of those. So those variables could be the input variables, the output variables, and so on and so forth. And we can specify the state of the system in terms of what will be impacted and what are we going to maintain. So this is what we have there. We have the operations. We have the different types of functions and mappings. All those things can be, put in the signature part. And we use this language. Our basic notation is the set notation and the discrete mathematics notation that we use in different places of discrete mathematics. So basic tools are the set theory and the sequence that we have. In the second part of the schema, we have what is known as the schema predicates. These schema predicates are the invariant conditions. They must hold. And these could be the preconditions, these could be the postconditions, whatever. But as a whole, we say that this is what the schema is supposed to maintain. And these predicates, they are written in terms of what we get as input, what we are going to have as output, and how the schema state changes, and what is the impact on that, and what are the conditions, what are the constraints on the different components of the schema. Just like we saw invariant conditions in our previous specification methodologies. So the concept is very, very similar. The difference is the notation and the structure of the schema. The basic feature of Z specifications, and note one thing here, again I would like to emphasize on this thing, that it is not Z. The designers of this language, they are very particular about it, and they are annoyed when you call it Z. They say, make sure that you call it Z, not Z. So once again, when we have this Z specification, the most powerful feature of this Z specification is
that we can write specifications in small chunks, little things that are easy to comprehend and specify. Small schemas, very little schemas can be written, and then they can be used together, put together. So this is the most powerful feature of Z methodology. So what happens is that, we start with very obvious things without going into too much complication, without having to specify too many things at one place. And then we have, the mechanisms by which we can use the previously specified things or previously specified schemas, previously developed schemas in our new schemas. So we saw a couple of examples in the last lecture also when we started to discuss the birthday book. In that example, we started with, just defining the state for the birthday book. We said that, it is going to have a set of names called known, and then it is going to have a function birthday, which is a mapping from this known set to dates. And when you apply this thing, it will give you a date for the given name. So this is what we have, this is what we defined. And then we put a constraint, that is, we cannot have any name in our set of known for which the mapping is not defined. So just 3 lines, and we specified that schema. Then we moved on to the next schema, and that was add our birthday. So in that particular case, we said that this new schema that we have is going to modify the state of the previous schema, or the schema that has already been defined. So we put a small delta there, signifying that in this case, this operation will change the state of that schema that we had earlier. And then we specified 2 variables that were input, the name and the date, and we show that this is going to be input by putting a question mark with the variable name, and so on and so forth. And then we wrote the predicates for that. And similarly, for the third function, find birthday, we have a similar operation, but this time we said that this operation, the schema here, when this schema is applied, will not update the state of the birthday book, but it will use that state, and then we performed certain operations. We wrote predicates for those, and this time we use this output variable, and that is shown by putting an exclamation mark at the end of the variable name. So those were the things, but every time writing 3-4 lines at a time and then putting those things together. Today we shall continue that discussion, and we will see first add a few more functions, few more schemas to this whole thing, and then we will apply, which I mentioned something, apply the concept of schema calculus. I mentioned in my previous lecture that we can use the previously defined schemas in many different ways. So one way is by using it in our new specification, just like we use this birthday book. So in the case of add birthday, we said that add birthday will use this schema birthday book, and it will update that schema. So when we use the name of a previously defined schema in another schema, that means we are using the previously defined schema. Very simple.
and obviously we will be maintaining the invariants and the schema predicates there. So this is one way of reusing what we have already specified. Another very important concept here is that we shall see a little later is what is known as schema calculus. So we will be looking at schema calculus today also. That is, if we have already written schemas, developed schemas, how can we use those already developed schemas to build new schemas and combine different schemas to build new schemas. So that will be done with the help of schema calculus. But let me continue from where I stopped last time. That is, I will first add new methods to this schema, and then I will move on to the schema calculus. So let me go back to the slide and show you this new method. So this time the problem or the function that I want to write is I want to find the person with birthday with a given date and generate a card for me. So the name of the schema here is remind. Once again, I have these symbol in front of the birthday book, which tells me that the birthday book, the state of the birthday book is not going to change. I have today question mark. That means that this is an input to this schema and it is of type date. And I have this cards exclamation mark, which means that this is an output, and this is a set of name. The schema predicate is cards exclamation mark is equal to n colon known, where birthday of n is equal to today. That means that it will give me a set of all values n drawn from set known such that the value of the birthday function at n is today. Now, once again, there is very little that is different from what we have seen earlier. But a new concept here. I mentioned that in my previous discussion. And here I'm showing that concept. And if you wanted to go back and change your previous schema, you would need to use something similar there also. Pichli discussion mein I mentioned that you cannot have two people with the same name in your birthday book. So you cannot have two Muhammad Alis in your birthday book. But two people can have the same birthday. So it is possible that we saw this example of one possible state in which two people, they happen to have the same birthday. That was 25th of March in that particular case. Now that means that if I give a date, I want to find out whose birthday is today, or for that matter any given day. So I want to find the name of the person. Now, since more than one people can have the same birthday, in that example, two people had the same birthday as 25th of March. So if I gave 25th of March, what I need to get back is a set of all the people who had the same birthday. So here the output in this particular case, that is the cards that I have, is not just a singular entry. So it is not just a single value that I get back. I get back a set of all the people who happen to have this birthday. Note one thing here also. In the case of the find
birthday, I gave the name of a person, and it would give me the associated birthday of that person. But in that particular case, I said that the name must be present in the known set. That means, I could give a name as long as the name was present in my birthday book. I could not give a name of a person for which I have not stored the value of the birthday. Now here the situation is different. I may give a day which is of type date, and nobody in my birthday book may have that birthday. आज की मैं अगर तारीख देता हूं तो मुझे नहीं पता कि आज की तारीख में मेरी वो जो बर्थडे बुक है उसमें से कितने लोगों की बर्थडे है, कोई है भी या नहीं है. So this set that I get back, set of cards that I need to print, they could be empty. So this set could be empty, no names. So, but I am not constrained to have a birthday in this particular case which is present in my birthday book. No. So I can have 0 or more values. So this is a slight difference from the previous specification, and we can use the same mechanism to develop our other specifications. So अगर मैं अपनी वो names वाली चीज़ को change करना चाहूँ तो I can do those things like that. So ये एक इसमें थोड़ी सी चीज़ थी. Now let me go back to the slides and show you, what else can we do with the previously specified specifications. Especially, if we want to, not sort of reinvent the wheel, but slightly modify the specification that has been written earlier. What do we need to do? The first specification here is, once again, there is nothing new. That is the init birthday book. So this schema will create a birthday book, and the schema predicate says the known is equal to an empty set. So this is just initializing the birthday book. So we will be using all these different schemas in our future discussions. The question that we have, what happens when we try to add a birthday for someone which is already known? And what happens when we try to find the birthday of someone not known? Remember, in our previous two schemas that we saw in the last lecture, add birthday and find birthday, there was a precondition. In the first case, the precondition was that the name that we are adding to this birthday book should not be present, should not already be present in the birthday book. So you cannot have duplicate names there. And in the case of find birthday, we said that the name that is input into the schema must be present in our birthday book. So दो constraint हमने यहाँ पर लगा दी. Now the question is, if those constraints are violated, we input a name which is already present, we input this name to the add schema, and we input a name which is not present in the known list to the find schema. How are we going to handle that situation? हमने ये तो कह दिया कि ये permissible नहीं है, ये हमारे schema को violate करेगा. But if that comes as an input, what do we do? Now that means that we need to modify those specifications. We need to strengthen those specifications
to handle those kind of situations. So one way is that we rewrite the entire thing again. But, we don't need to. And this is the beauty of Z specifications, that if we have already developed something which is partially correct and we want to strengthen it for whatever reason, we can add to that schema without actually having to rewrite the whole thing. And this is how we do that. So let us, define a new schema, success. This success has an output variable result, which is of type report. So report could be anything. And we say that success, the schema predicate is result is equal to OK. So when there is success, OK will be reported back. So now what we do is we use schema calculus to combine the add birthday and success. So we use conjunction to combine add birthday and success. So we say add birthday and success. This describes an operation which for correct input both acts as described by add birthday and success. So once again, what we have done is we have taken a very simple small step. And what we have done is we have defined a new schema, success, and we have joined the two schemas, add birthday and the success. These two schemas we have joined together using the conjunction here, ANDed them together. अब दोनों, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि दोनों के कुछ इनपुट्स हैं, कुछ प्रेडिकेट्स हैं, कुछ आउटपुट्स हैं. In this particular case, success की input कोई नहीं थी, simply output थी. So both these schemas या तो पूरा का पूरा होगा या कुछ भी नहीं होगा. For the add schema, we had this precondition that the name should be member of the known set. The name that is input to that schema should be member of the known set. So अगर ये predicate fulfill नहीं होता, that means ये schema fire नहीं होगा, ये schema execute नहीं होगा. Schema predicates ये कह रहे हैं कि this cannot be violated, and if it is violated, nothing will happen, it will not do anything. ठीक है जी. So जब हमने इन दोनों को इकट्ठा कर दिया, success और add birthday को, तो इसका मतलब ये है कि जब add birthday होगा उसके साथ success भी रिपोर्ट होगी. अगर it is, the precondition is not met in the add birthday schema, that is the name is not known, तो क्योंकि वो predicate fulfill नहीं होगी तो ना वो चलेगा ना ही उसके साथ success होगी. सो दोनों को हमने इकट्ठा कर दिया. हमने कर दिया कि add birthday जब चलेगा तो साथ में success भी रिपोर्ट होगी. सो बड़ी सिंपल सी एक और स्कीमा बना दिया. सिंपल सी कंजंक्शन के जरिए हमने दोनों को इकट्ठा कर दिया. सो दिस इज द केस व्हेन समथिंग हैपन्स, ये कि जी आपने ये ऑपरेशन किया and it is reported that the operation was successful. Now we have to do something similar when the operation is not successful. So let us see that. So in this particular case, we create a new schema already known, and this already known is a birthday book, where it says that the birthday book, the state will not change. The input is name, the output is result, and name is a member of known, and the result, that is output, is sort of a report that this thing is already known. Now what we are doing here, once again, the schema itself is very simple, so there is no need to probably discuss this in detail. But what is happening here, remember हमने ये कहा था कि add birthday में precondition is that the name should not be known. When that
condition is violated, that means the name is already known. So इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अब already known अगर होगा, then we do not specify that, then that schema will not will not be executed, जो add वाला जो है. So इसका मतलब ये है कि हमने वो add वाले के साथ हमने success को इकट्ठा कर दिया था कि add होगी तो साथ में success report होगी. और add किस वक्त नहीं होगी? Add उस वक्त नहीं होगा जब the name is already known. So हम ये कहते हैं कि हमारी तीन चीजें पॉसिबल हैं, दो चीजें पॉसिबल हैं. या तो it is already known. In that particular case, I want to report that I could not add because the name was already known. या it was not known, it was added and success was reported. So दो चीजें हैं, success and add birthday or already known. So this is what I will do. I will write this statement using my schema calculus, and this will give me this enhanced model in which if the name is already given, that is reported and nothing happens to the state of the birthday book. But I know that nothing happened because it was already there. So what I do is I create a new schema. This new schema is R add birthday, and I have this equal and a small hat on that. This says add birthday and success or already known. So this basically describes a new schema obtained by combining three already defined schemas. So this R add birthday is a new schema, and now I can use this schema in my further discussion and specifications. So what I have done is छोटे छोटे तीन स्कीमा बनाए. एक वो मेरा पुराना add birthday था, वो वाला, वो मैंने I took that. एक मैंने सक्सेस का, तो मैंने कहा कि अगर बर्थडे नई एंट्री ऐड हो गई तो साथ में सक्सेस रिपोर्ट कर दो. अगर नई एंट्री ऐड नहीं हुई तो वो किस वजह से नहीं होगी? वो इस वजह से नहीं होगी कि द नेम इज ऑलरेडी नोन. तो इन दैट पर्टिकुलर केस मुझे sort of failure report कर दो और बता दो कि this is already known. So I'm not saying failure per se, but I'm saying that nothing happened because it was already known. So या तो ये पार्ट फायर होगा या ये पार्ट फायर होगा, बीच में दोनों के डिस्जंक्शन मैंने डाल दी और मैंने एक नया स्कीमा क्रिएट कर दिया. That was R add birthday. So how do I write it? I write R add birthday equal के ऊपर ये छोटा सा hat. So this notation is used when I combine previously defined schemas using logical statements. So what I did was I said, either it is successful and the name is added along with the birthday into the birthday book, or I report that it was already known. This is really where Z is so successful and powerful. What we have done here is, you have seen कि हमने छोटे छोटे schemas लिखे. Each schema itself was a very simple, straightforward kind of entity. 2, 3, 4, 5 लाइनें हम लिखते हैं. Simple steps, we take those steps, we write simple specifications, and then we combine those specifications to build more complex specifications and add meat to those specifications. So ये schema calculus itself जो है, ये एक बड़ा पावरफुल टूल है.
सो जो भी आपने यहाँ पर डिस्जंक्शन या कंजंक्शन आपने की है, इनके प्रेडिकेट्स जो हैं वो उसी तरीके से आपके ऐड हो जाते हैं इस नए स्कीमा में. सो दिस न्यू स्कीमा जो अभी हमने बनाया, ये विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ all the previously made schemas, and it fulfills the purpose. Remember that the key to building complex systems is, key to the success is that we should be able to decompose that system into smaller components, and then should be able to put those components together to build complex and bigger systems. And that is why object-oriented paradigm is so successful. The idea really is that, we build small units using classes and objects, those kind of concepts. And then, we put those independent kind of units, abstract data types, put them together into larger systems. So model हमने system को किया by putting all these pieces together, and we have our big complex system. Each class in that system may not be that complex, but it is kind of a self-contained entity. जो idea ये है कि cohesive entity हो which can be easily understood and used. So यहाँ पर भी idea ये है कि each schema is an independent, well-defined entity which only focuses on one aspect of the problem. तो हम ज़्यादा चीज़ें इसमें नहीं लेके आएंगे, ज़्यादा चीज़ें हम नहीं करते, छोटी छोटी स्कीमा स्पेसिफिकेशंस को बिल्ड करेंगे और उनको कंबाइन करते जाएंगे. दूसरी इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो स्कीमास जो हम बिल्ड कर रहे हैं, ये स्कीमास, इसकी नेचर डिपेंडिंग अपॉन कि हम किस चीज के लिए कर रहे हैं फर्क हो सकती है. जो हमने पहला स्कीमा बनाया था, दैट वाज द बर्थडे बुक इटसेल्फ. There we only specified, we only mentioned the state variables. कुछ और नहीं हमने यूज किया कि known का सेट है और birthday है which is a set, which is a mapping, which is a function, जो आप जैसे भी उसको आसानी से समझ सकें. And that was about it. And then we specified certain constraints, then we specified certain predicates कि जी ये इनवेरिएंट कंडीशंस इसके ऊपर होंगी. सो इन दैट पर्टिकुलर केस, दैट वाज द ओवरऑल स्टेट ऑफ द सिस्टम. वी वर जस्ट मेंशनिंग, वी वर जस्ट डिस्क्राइबिंग द स्टेट ऑफ द सिस्टम. ये स्कीमा सिर्फ स्टेट पे था. बाकी जो स्कीमास जो हमने डिफाइन किए, जिसमें ऐड बर्थडे, फाइंड, रिमाइंड, इनिट, वो उस स्टेट के ऊपर स्कीमास हैं. सो ईच वन ऑफ दोज वुड बी काइंड ऑफ अ फंक्शन, काइंड ऑफ अ मेथड, काइंड ऑफ एन ऑपरेशन दैट वी कुड परफॉर्म, एंड वी से कि जी ये बर्थडे बुक से इसका ताल्लुक है, एंड ये उसको चेंज करती है, ये इसको चेंज नहीं करती, ये इसकी इनपुट है, ये इसकी आउटपुट है. ऑल दोज डिफरेंट थिंग्स वी वर पुटिंग टुगेदर. सो हर फंक्शन के लिए एक स्कीमा बन सकता है, आपकी स्टेट के लिए अलग से स्कीमा बन सकता है. देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन बाय द वे कि यू कैन नॉट पुट ऑल दीज डिफरेंट थिंग्स टुगेदर इन वन स्कीमा, बट दैट वुड मेक इट मोर कॉम्प्लेक्स. The idea really is to make those small things, build those small things, and then put them together. So that is what this Z is all about. Now let us go back onto the slide and now add a couple of more things to the this birthday book, and add a new schema and enrich some of the previously
build schemas. Now, the problem really was that we also wanted to take the corrective measure when an unknown name is sent to the find birthday method or schema. So in that particular case, once again, we take a very similar approach that we took in the case of our add birthday, and then strengthened that schema. In this particular case, we define a new schema, not known. And in this particular case, we say that this schema is not going to change the birthday book. There is this name which is input to the birthday book, and the output is the result, which is of type report, type text. And the predicate in this particular case is that this name is not known, and result is this text which is not known. So name is not a member of known set. Since we have defined this predicate onto the input, we have defined this constraint on the input. This is our precondition for this method. So once again, what we are doing here is, हम बिल्कुल उसी तरीके से स्टेप्स ले रहे हैं कि जो फाइंड का जो मेथड था उसमें प्री कंडीशन थी द नेम शुड बी नोन, एंड इफ दैट प्री कंडीशन इज नॉट मेट, नथिंग वुड हैपन, बिकॉज या तो सारी की सारी स्कीमा में जो आपके प्रेडिकेट्स हैं दे विल बी फुलफिल्ड, दोज विल होल्ड, otherwise, and then जो भी काम होना है वो होगा या कुछ नहीं होगा. So if the precondition is not met, nothing will happen. So हम क्या करें? हमने बिल्कुल उसी तरीके से ये स्ट्रेटेजी बनाई जिस तरीके से हमने स्ट्रेटेजी ऐड के उसको स्ट्रेंथन करने के लिए थी कि in that particular case our requirement was that this name that is being input should not be already there. Now in the case of find, we say the name that is being input must be present in the name known set. अगर वो नहीं है तो मैं आपको उसकी बर्थडे नहीं दे सकता. तो प्री कंडीशन इज कि बर्थडे देने के लिए आई नीड टू हैव अ नोन नेम देयर. सो उस केस में हमने सक्सेस को जोड़ा था आपके ऐड के साथ. सो वंस अगेन वी से फाइंड या तो होगा, इसका मतलब है अगर फाइंड हो गया साथ में मैं आई विल रिपोर्ट सक्सेस, और फाइंड अगर नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा? फाइंड इस वजह से नहीं होगा कि मेरा जो नाम जो मैंने इनपुट किया था दैट नेम वाज नॉट प्रेजेंट इन द नोन सेट. So when the name was not present in the known set, that means I would not do anything, कोई आउटपुट जनरेट नहीं होगी. So once again जिस तरीके से मैंने ऐड के लिए किया था कि already known or I have the conjunction of this success and add, here I will say not known or success and find, ये दोनों चीजें मिला के सो मैं वंस अगेन उसी तरीके से स्कीमा कैलकुलस यूज करूंगा एंड आई विल क्रिएट अ न्यू स्कीमा यूजिंग द सेम मेथडोलॉजी. सो हियर इज द रोबस्ट फाइंड बर्थडे. दिस रोबस्ट फाइंड बर्थडे इज आर फाइंड बर्थडे equal and small hat on equal. This is find birthday and success or not known. Once again, very simple logical statement, nothing more than that. So ये आपने देखा कि कितनी आसानी से what I have done is कि जो previously used और previously developed schemas थे उनको schema calculus से इकट्ठा करके तो मैंने एक ज़्यादा robust schema बना लिया. और जिस तरीके से मैं पहले कह चुका हूं यही मेन स्ट्रेंथ है Z की. आगे चल के हम Z के बारे में जब और एग्जाम्पल्स देखेंगे तो और भी बहुत सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे और स्कीमा कैलकुलस और उसकी मुख्तलिफ जो उसमें एस्पेक्ट्स हैं उसको देखेंगे और उसके साथ साथ उसको डिस्कस करेंगे और आप देखेंगे कि क्या वजह है कि Z इज़ सो पॉपुलर.
Z is popular because you can build small schemas, and then you can use those small schemas to build complex systems. यहाँ पर दो तीन चीज़ों को अब मैं दोबारा से इस एग्जाम्पल के कॉन्टेक्स्ट में हाईलाइट करना चाहता हूं. What I would like to once again show you is कि कहां से हम शुरू हुए थे. हम शुरू हुए थे बर्थडे बुक. उस बर्थडे बुक पे हमने उसकी स्टेट डिफाइन कर दी. जब हमने उसकी स्टेट डिफाइन कर दी, उसमें कुछ नहीं था, स्टेट के बारे में इंफॉर्मेशन थी और इनवेरिएंट कंडीशंस थी. Invariant condition in the case of Z is known as the predicate schema predicates. ठीक है जी, ये हमने कर दी. उसके बाद हमने एक मेथड लिखा, that was the add birthday, और उसमें हमने certain constraints कहीं, और हमने कहा कि add birthday में जो नाम जो है वो दोबारा नहीं हो सकता. जब हमने ये कहा था कि नाम दोबारा नहीं हो सकता, एक्चुअली इम्प्लिसिटली इट वाज ऑलरेडी देयर. प्री कंडीशन में हमें ये चीज कहने की शायद जरूरत नहीं थी, बिकॉज हम ये कह चुके थे ऑलरेडी इन आवर बर्थडे बुक स्कीमा दैट दिस नोन इज अ सेट. So when the known is a set, that means एक नाम दो बार नहीं आ सकता. सेट की ये बेसिक डेफिनेशन है, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि एक सेट में कोई एक एलिमेंट दो बार रिपीट नहीं होगा. लेकिन यहां पर हमने उसको एक्सप्लिसिटली लिखा. उसकी वजह यह है कि लेट्स से कि जी अगर हम ये ना लिखते, इफ दिस प्री कंडीशन वॉज नॉट प्रेजेंट देयर, व्हाट वुड हैपन. क्या इसका ये मतलब होता है कि अगर वो नाम ऑलरेडी प्रेजेंट है तो ये मैं मैपिंग जो ऐड कर रहा हूं, ये मैपिंग नाम तो ऑलरेडी है, व्हाट विल हैपन टू दिस मैपिंग? विल इट रिप्लेस द ओल्ड मैपिंग? सो इज इट एन एडिट फंक्शन ऑल्सो, जिसमें नाम के अगेंस्ट जो डेट लिखी हुई है उसको मैं एडिट कर रहा हूं, इफ इट इज ऑलरेडी नोन. अगर मैं यहां पर ना कहता कि द नेम मस्ट नॉट बी नोन, इन दैट पर्टिकुलर केस मैं उस मैपिंग का क्या करता? आई वुड हैव टू डू समथिंग अबाउट इट. सो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि ऑल्दो ये सारी चीजें आपस में हैं, लेकिन they sort of reinforce each other and they must be consistent with one another. ये नहीं हो सकता कि मैं पहले कह दूं कि इट इज अ सेट और यहां पर मैं कह दूं कि ये नाम आ सकता है और ये मैपिंग एक और ऐड हो जाएगी. बिकॉज इफ दैट मैपिंग इज एडेड, दैट मीन्स माई कंडीशन इज वायलेटेड. पहली बात कि वो सेट नहीं है, और फिर फंक्शन की डेफिनेशन पे पूरा नहीं आएगा कि एक ही नाम के अगेंस्ट दो बर्थडेज मेरे पास नहीं हो सकती. इन दैट पर्टिकुलर केस आई विल हैव टू हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ कलेक्शन, डिफरेंट काइंड ऑफ mechanism to state that, and we shall see that in our subsequent example. दूसरी इसमें चीज जो देखने वाली है, ऑल्दो हमने वो लिखी तो वैसी ही थी, प्रेडिकेट्स जिस तरीके थी कि एक प्रेडिकेट और दूसरी प्रेडिकेट, और कुछ प्रेडिकेट्स को मैंने कहा था कि ये प्री कंडीशंस हैं. हाउ डिड आई नो कि ये प्री कंडीशंस हैं? बड़ी सिंपल सी उसमें बात है कि वो प्रेडिकेट, वो इनवेरिएंट कंडीशन जो आपकी इनपुट पे डिफाइंड हो. When you're saying that your input must follow this particular rule, it must obey this condition, we have a predicate that does that. That means, that is a precondition, because that predicate is being defined on the input.
जो सिर्फ इनपुट पे डिफाइन की जाएगी, दैट विल बी योर प्री कंडीशन। ये चीज हम पहले अपनी स्पेसिफिकेशंस में भी देख चुके हैं, एंड वंस अगेन इट इज अ वेरी वेरी सिमिलर कॉन्सेप्ट, ऑल्दो एक्सप्लिसिटली यहां पर इसको ऐसे कहा नहीं जाता। और दूसरी प्रेडिकेट्स तो हैं ही, सो दोज प्रेडिकेट्स आर एंडेड। सो अगर आप देखें तो ये बहुत हद तक इसका स्ट्रक्चर आपको हमारी जो ऑब्जेक्ट कंस्ट्रेंट लैंग्वेज से मिलता जुलता नजर आएगा, और आप दोनों में बहुत ज्यादा सिमिलरिटीज आप ढूंढ सकते हैं। फिर तीसरी चीज जो हमने इसमें देखी वो ये थी कि पहले एक फंक्शन लिखा ऐड का, फिर हमने फाइंड का लिखा, देन यू नो वी हैड दिस क्वेश्चन कि अच्छा यार ये शुरू किधर से होगा, व्हाट इज द इनिशियल स्टेट। हमें बाद में ख्याल आ गया कि ये इनिशियल स्टेट के बारे में भी कुछ कहना है, सो वी रोट अ स्कीमा टू इनिशियलाइज द स्टेट। वंस अगेन किसी भी स्टेज पे आपने लिख दिया और आपकी वो स्पेसिफिकेशन उसके साथ साथ चलती रही, वो कंप्लीट होती गई। देन वी सेड कि अच्छा एक हमने ये एग्जांपल देखी कि एक से ज्यादा वैल्यूज रिटर्न हो तो फिर कैसे हम लिखेंगे। सो इन दैट केस वी सेड कि जी इट विल, वो जो रिमाइंड का जो फंक्शन था कि आज की तारीख में मुझे बताओ कि कितने लोगों की बर्थडे फॉल करती है, वो एक सेट की फॉर्म में हमें वापस मिल गया। देन वी हैड द थर्ड केस कि अच्छा ये तो प्री कंडीशंस तो मैंने डिफाइन कर दी, अब वो प्री कंडीशन वायलेट होगी तो एरर कंडीशन कैसे होंगी, मुझे आई हैव टू सॉर्ट ऑफ स्पेसिफाई दैट एज वेल। हाउ डू आई डू दैट? वंस अगेन उसके लिए आई यूज स्कीमा कैलकुलस। आई डिफाइंड न्यू स्कीमास जिसमें वो एरर कंडीशन अगर वो पैदा होती है तो मुझे कोई उसके बारे में रिजल्ट वगैरह मिल जाए, एंड देन आई यूज्ड दोज टू कंबाइन दोज स्कीमास। So these mechanisms that I had, those mechanisms, they were useful in building those schemas. I could have preconditions, and then there were other things that we saw here. If I wanted to show the change in the state, how do I do that? बिल्कुल उसी तरीके से नोटेशन यूज मैं करूंगा जो इससे पहले मुख्तलिफ फॉर्मुलेशंस में मैं देख चुका हूं। हमने किसी जगह उसे कहा ओल्ड, किसी जगह हमने उसको डैश के साथ आइडेंटिफाई किया, सिग्निफाई किया। इन Z स्पेसिफिकेशंस अगर ओल्ड वेरिएबल है, पुरानी स्पेसिफिकेशन है, जो ओल्ड वैल्यू की और न्यू वैल्यू के साथ कंपैरिजन हम कर रहे हैं, तो अगर हम वेरिएबल का नाम वैसे का वैसे ही लिख देते हैं तो इसका मतलब है कि दिस इज द ओल्ड वन। जब हम उसके डैश लगा के लिखते हैं तो इसका मतलब है दिस इज द मॉडिफाइड वन। वंस अगेन मेरा पॉइंट ये है कि जितना आप इन चीजों को देखते जाएंगे और जितना आप इस पे गौर करते जाएंगे, आप ये देखेंगे कि फंडामेंटल्स वैसे ही हैं, उसी तरह की हैं। अब हर एक जो मेथडोलॉजी है, जाहिर है कि पिछली मेथडोलॉजी से कुछ सीख के आगे बढ़ रहे हैं। वी आर नॉट री इन्वेंटिंग द व्हील, द बेसिस आर द सेम। जिस चीज पे ये सारी चीज खड़ी है वो वही चीजें हैं। वो हमारा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है, वो हमारा लॉजिक है, वो हमारा सेट थ्योरी है, एंड दोज काइंड ऑफ थिंग्स। सब कुछ उसी पे बिल्ड हुआ है। प्री कंडीशन, पोस्ट कंडीशन, हॉर्स ट्रिपल जो है वो यूज कर रहे हैं। अब यहां पर हॉर्स ट्रिपल हम एक्सप्लिसिटली हम नहीं कह रहे। वी आर नॉट सेइंग कि दिस इज आवर प्री कंडीशन, दिस इज आवर पोस्ट कंडीशन, बट व्हाट वी आर सेइंग इज दिस इज आवर इनवेरिएंट कंडीशन। एन इनवेरिएंट कंडीशन इन टर्म्स ऑफ द स्टेट, कि जब ये काम होगा तो इस तरीके से स्टेट चेंज होगी। वो हमने पोस्ट कंडीशन उस मेथड की उसमें लिख दिया
कि ये वैल्यू उसमें ऐड हो जाएगी बर्थडे के केस में हमने लिखा था, व्हेन वी सेड ऐड बर्थडे। सो ये नया जो आपके पास डोमेन और रेंज के जो मैपिंग का पेयर है, दिस न्यू पेयर वुड बी एडेड टू योर बर्थडे सेट। सो दैट वाज आवर पोस्ट कंडीशन देयर। एंड एट द सेम टाइम हमने कहा कि जो इनवेरिएंट कंडीशन जो हमने स्कीमा में शुरू में डिफाइन की थी, दैट इनवेरिएंट कंडीशन स्टेज देयर। तो आप ये देखें कि किस तरीके से सिंटैक्टिक डिफरेंसेस अपनी जगह पे, उसकी स्ट्रक्चरिंग अपनी जगह पे, लेकिन बेसिक मेथडोलॉजी, फंडामेंटल्स, बेसिक थीम वही है। बट Z is very powerful, Z is very successful, and Z is very popular because इसकी मेथडोलॉजी में ये चीज शामिल है कि किस तरीके से आपने छोटी छोटी स्पेसिफिकेशंस को बनाते जाना है और उनको आपने इकट्ठा किए जाना है। अगले जो लेक्चर में मैं I'll show you another example of Z specifications. Once again, that is not going to be a very complex specification, but you know that this example has been taken from a real system for, you know, controlling the insulin pump. Insulin pump शायद अगर आपको पता हो, वो इस तरह की चीज होती है कि जिन लोगों को डायबिटीज की शिकायत होती है, शुगर जिसे हम उर्फ आम में कहते हैं, उसकी शिकायत होती है, जिनका पैंक्रियाज इज नॉट वर्किंग, दे नीड टू हैव दिस इंसुलिन इंजेक्टेड इनटू देयर सिस्टम सो दैट वो ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन कर सके। सो दिस इंसुलिन पंप, you know, sort of replaces the pancreas. And अगर वो उसमें एक प्रॉब्लम ये है कि ज़्यादा अगर इंसुलिन चली जाए, दैट कैन बी फेटल, सो इट नीड्स टू बी वेरी स्ट्रिक्टली कंट्रोल्ड। ये स्पेसिफिकेशन जो अगले लेक्चर में हम देखेंगे, वंस अगेन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम दैट डिवाइस एंड दैट स्पेसिफिकेशन, एंड सी कि किस तरीके से क्रिटिकल सिस्टम्स को हम डिफाइन कर सकते हैं। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपको वो स्पेसिफिकेशन दिखाऊंगा। उस वक्त तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़ और अस्सलाम वालेकुम।